Good evening, everyone. Please let me know. Am I audible or not? Please let me know, guys. Okay, thank you for your response. Okay, thank you. Yes, good evening, a very good evening. 69 न्यूज ये कैसा नाम है भाई? I'm good, shut off. Yes, good evening, Mushini. अच्छा, वैसे ही रखा था. Okay, how are you guys? कैसे हो सब लोग? Please let me know. सब बढ़िया? Okay, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. Very good. Glad to hear you all are very good. Janki Sharma, how do you do? Actually, I do job, Janki, as a data annotation. Okay, let's start. Let me share my screen first. Okay, guys, I hope my screen is visible now. Please leave a comment for confirmation. My screen is visible or not. One more thing, guys. You all are understand Hindi. Shall I continue in Hindi or shall I continue in English or Hindi and English mixed? Please let me know, guys. Radhe Radhe. Okay. Mix Hindi English mix. A little bit Hindi is okay. Okay. ओके इंग्लिश कोई बात नहीं मैं दोनों लैंग्वेज मिक्सड अप करके ही पढ़ाऊंगा कोई बात नहीं ओके सबसे पहले ओके सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ओके ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न linear regression model okay so what is linear regression model linear regression model क्या है first of all okay does anyone have any idea about linear regression model okay first of all you guys told me told me
You guys have any idea what is machine learning? What is machine learning? If you have any idea, then let me know. Let me know in the comment box. नहीं, एक ही स्ट्रीम में तो नहीं कर सकते. Okay, so machine learning is a way to teach computer to learn from data. Okay, मतलब यहाँ पे क्या है, जब जब एक बच्चे को हमें उसको सिखाना पड़ता है. लाइक अगर एक बच्चा है तो उस बच्चे को क्या पता है कि एक बॉटल है, दिस इज अ बॉटल, और दिस इज अ पेन, इट्स ए कंप्यूटर, इट्स अ कीबोर्ड. A child cannot understand. Okay, उसको सिखाना पड़ता है. लाइक दिस, एक इमेज दिखा के, लाइक एक अगर बॉटल का इमेज दिखा के उस बच्चे को अगर समझा ना जाए कि दिस इज अ बॉटल, और यू कैन यूज ए पेन टू रिकॉग्नाइज इट, this is a pen. Okay, so machine learning is about to same thing. Machine learning is nothing but it's a way to teach computers to learn from data. तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा. स्किन इज ब्लर, क्या बोल रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, मशीन को, मशीन मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को हम लोग सिखाते हैं किसके मदद से, डेटा की मदद से. डेटा के ऊपर बेस करके हम लोग कंप्यूटर को सिखाते हैं कुछ, कि जाकि वो आगे चल के डिसीजन ले सके. ओके, so it can make decision or prediction without being directly programmed. Okay, think of it like, imagine you are teaching a child to recognize fruit. Okay, as I told you in Hindi. Now I will explain in English. Imagine you are teaching a child to recognize fruits. Okay. First, you show them many apples and banana. Okay. You show the child many apples and bananas. Okay. Tell them which is which. Like first you show his or her a banana and tell her this is a banana, and then you show her a apple and tell it this is an apple. Okay. Then what will happen? Then over time the child learn to tell the difference by noticing pattern. ओके, लाइक कलर, शेप एंड साइज. देखो, एक बनाना और एक एप्पल का पैटर्न तो अलग होता है ना. एप्पल कैसा होता है, एप्पल होता है. ओके, इंग्लिश. सो सो एप्पल, लाइक इन राउंड फॉर्म एंड रेड इन कलर. ओके. ओके. ओके, स्लाइड तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया. फ्रॉम टुमारो. ओके ओके, आई विल ट्राई आदित्य. फ्रॉम टुमारो. ओके. सो then in machine, we do the same with computers. We give the computer a lot of examples. Okay, this can be text from, it can be a video, it can be image, it can be anything. Okay, the computer looks the pattern. Okay, the computer looks the pattern. Okay, Vishal, I will try my best. Uh, then it learn to make prediction or decision its own.
Okay, a simple example. So you want a computer to predict a house price. Okay, अगर लेट्स सपोज मैं कंप्यूटर को छोड़ो, फॉरगॉट अबाउट कंप्यूटर, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, इफ आई विल टेल यू गाइस, यू हैव टू प्रेडिक्ट a price of a house. Okay, you have to predict a price of a house. Okay, तो तुम लोग किसके बेसिस से उस हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट कर पाओगे? ओके, फॉर व्हिच फीचर और फॉर व्हिच basis of which you can predict the price of the house? You guys let me know in the comment box. किसके ऊपर बेस करके तुम लोग एक हाउस का एक अप्रोक्सीमेटली प्राइस तुम लोग गेस कर सकते हो कि इस हाउस का प्राइस हो सकता है सपोज 20 लाख रुपए, और यस, लोकेशन, condition and place, the area can be, okay, the area of square feet, कितने rooms है, like bedroom numbers, bathroom numbers, area, size, location. Okay, okay, okay. So how do you guys know कि एक हाउस को उसके साइज या उसके नंबर ऑफ बेडरूम्स या लोकेशन के ऊपर बेस करके प्राइस उसका हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली प्राइस उसका हो सकता है? हाउ डू यू गाइस नो? क्योंकि तुम लोगों ने सीखा है पहले। ओके, यू गाइस लर्न, like if a house in located in Mumbai or it's a 4 BHK, then its price should be higher. Okay, and if a house located in a rural site or like 1 BHK, then its price lower than the Mumbai house. Okay, so how you guys know? Because you learn. That's why you know, guys. Okay, same, you give you give the past data to computer like house size, number of bedrooms, location, and those houses price. Okay, the computer learn from this. Computer learn from this. कंप्यूटर क्या करेगा, उस प्रीवियस डेटा के ऊपर लर्न करेगा कि एक हाउस का अगर साइज इतना स्क्वायर फुट है और उसका बेडरूम का नंबर इतना है और उसका लोकेशन वहां पे है, तो इसका प्राइस ए है। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल में, if a house size in 300 square feet, there are four number of bedrooms and the location in Delhi. Okay, the price is this XYZ. Okay, so you give the computer past data, the computer learn from this data, and later, if you give a new house size, bedroom counts, and location, it can guess the price. Okay. Yes, I will explain with practical and code. Explain from basic. Okay. First of all, you need to download Python in your system. Okay. So I think you guys know how to install Python and how to install VS Code. Okay. मैं आशा करता हूँ तुम सभी के पास VS Code and Python है. If anybody doesn't have Python, then let me know. I will show you. Okay. I will I will show you guys how to install Python. Just go to your Google Chrome or any other browser. Okay, just just click a new tab and just type Python download, then hit enter, then go to this first link, download Python, and click here, download Python 3.13 latest version. Download the latest version for Windows. Okay, I think guys, most of you using Windows, so just download this, and after downloading it, just go to your file manager
download section, and you can show here a exe file Python. Just double click it and run it, then yes 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 install. ओके, ऐसे करने से पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तुम लोगों को, ये सब तुम लोगों को पता है आई गेस। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। 3.10 हो, 3.9 हो, कोई बात नहीं। ओके ओके, यू ऑल नो, you all are intelligent, don't worry. Okay, after downloading Python, just create a new file, any of your location in your computer. Just create a new file, new file, no, sorry, new folder. Just and you guys also have installed VS Code in your machine. Okay, VS Code or any other IDE. Okay, just open this new folder with your code. Okay, so first of all, you guys tell me, you all know basic Python, na? What is data type, what is variable, if else, loop, condition statement, data structure, list, tuple, dictionaries. Okay, very good. Then मेरे लिए और भी ज्यादा सुविधा हो गया, तुम लोगों को पता है ऑलरेडी पाइथन बेसिक, वेरी मच familiar. Great. Yeah, sir, all topic clear in Python. Okay, okay, very good, very good. Not list, tuple, dictionary. uh, कोई बात नहीं, यस, सीख जाओगे। यूट्यूब में जाके एक बार देख लेना, पाइथन लिस्ट करके या पाइथन टपल डिक्शनरी एक बार देख लेना, एक दो वीडियो देखने से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ go to your VS Code and create a new file. Here I will create called app.py. You can rename it any with anything. Okay, now you have to install some basic libraries for using machine learning. Okay, you have to install basic libraries, and you guys know Python very much as you told. Then you guys also know how to install libraries in Python, like pip install, then libraries name. Okay, you guys know it like this. Just open your command prompt and like this pip install and libraries name like pandas. Then hit enter. You guys know it. Okay, I have already downloaded, so that's why it's show requirement already satisfied. Okay, now I will tell you what libraries needed for this project. Okay, first of all, you guys need, I will write it. Uh, First you need pandas, pandas. Then you need numpy. Then you need मैटप्लॉटलिब for data visualization. Okay, install कर लेना इसको मैटप्लॉटलिब, then our machine learning model. Okay, just go to a new tab, scikit learn, इसका स्पेलिंग देखना था एक बार एक्चुअली।
just this pip install scikit-learn. Okay, matplotlib and scikit-learn. Okay, download those libraries. Okay, now let's move to code. Today we will see, as I told you, how to predict a house rent with the previous data. Okay, so this also known as linear regression. Linear regression means the linear data. So what do you mean by linear data? Linear data means एक डेटा मतलब दूसरे ऊपर डेटा के ऊपर डिपेंड करता है. अगर उस डेटा का वैल्यू इंक्रीज होता है तो इस डेटा का भी वैल्यू इंक्रीज होगा. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, for pizza. Okay, if a pizza size is 10 inch is a pizza size is 10 inch, then उसका प्राइस होगा, सपोज उसका प्राइस होगा, सपोज अगर चलो $3. Okay, then if a pizza size can will 20 inch, then price will increase, to like $5. Okay, so that is called linear value. Okay, so एक वैल्यू अगर बढ़ता है तो उसके साथ ये वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर एक ये वैल्यू घटता है मतलब डिक्रीज होता है तो ये वैल्यू भी डिक्रीज. Okay, so one more thing guys before start coding, this known as independent variable. Okay, and this price known as dependent variable or target variable. Okay, why guys? Because price is too much depend on the size of pizza, right? Because if the mm, size will increase, the price will increase among the size. Okay, so that's why it's known as dependent variable. So price depend on size or anything. Okay, this is known as dependent variable and this is independent variable. Okay, now no, and we denote in machine learning dependent variable as y, and sorry y, and independent variable as x. Okay, now after installing libraries we have to import them. Okay, first import pandas. As pd pd. ओके, सो pd एक वेरिएबल है जिसके अंदर पांडा मेरा स्टोर होगा. ओके, देन we have to import matplotlib for data visualization. Import matplotlib dot pyplot as plt. Okay, then most important model for machine learning. इसको ऐसे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn, जिसको इंस्टॉल किए हो scikit-learn. ओके, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. ये क्या है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. ओके, डोंट वरी गाइस, आई विल एक्सप्लेन इट व्हाट इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. ओके, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी. फ्रॉम sklearn dot linear model import linear regression. So this is our model, and also we need another library, sklearn dot preprocessing import label encoder. I will explain it also, don't worry guys, मैं हूँ. And we need another library for checking the model accuracy for sklearn dot
matrices import R2 score. Okay. Now prepare a data set for it. Okay. So I have a file called यहाँ पे data नाम का. इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को इसमें है क्या. ओके. सो एज आई टोल्ड यू गाइस, एक हाउस रेंट का एक डेटा है मेरे पास, एक हाउस प्राइस का. तो इफ ए हाउस साइज इज स्क्वायर फीट. ओके. साइज मीन्स इन स्क्वायर फीट. ओके. सो 1140 size and the bedroom is 3 and location in Kolkata. The rent can be 27,000 something. If a house size is something and bedroom 3 and location in Mumbai, then the price will increase too much. Okay. Then then to then थोड़ा बड़ा घर है, then location Delhi, then price a little bit higher. Okay. Then 4 BHK, then 41,000. Okay. So there I have a simple data with 100 of data, 100 rows. Okay. There are size, bedroom, location, and rent. A basic data set. Okay. एकदम basic data set for better understanding. इसको लेके try करते हैं. So copy this and paste your here. So we have our data set and we have our model. Okay. First, you have to load the data. पहले तो डेटा को लोड करना होगा, है ना. मशीन को देने से पहले डेटा को तो पाइथन में लोड करना होगा. सो हाउ टू लोड द डेटा, मैं लिख के भी देता हूं यहाँ पे. लोड द डेटा सेट. लोड द डेटा सेट. ओके. सो गाइस, यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी in the comment section. Share the data set. Okay, I will share in the WhatsApp group. Okay. In our codex internship जो WhatsApp group है उसमें मैं शेयर कर दूंगा. Okay. Then load the data set. So how to load the data set? So for load the data set, you use pd.read. pd means panda. यहाँ पे panda. Okay. So I'm not going to explain panda from basic. Okay. So this is and एक पूरा एक अलग टॉपिक हो जाता है अगर मैं पांडा को एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करना शुरू हो जाऊं. तो अगर पांडा किसी को नहीं पता है तो in this YouTube channel, we have posted a separated video with pandas. Okay, you can guys watch. Okay. So first of all, we have to load the dataset. We create create a variable called df. कोई भी variable create कर सकते हो कुछ भी नाम से. I write here df. df means data frame. Okay. df then pd means panda here. मेरा pd dot this is the data is in CSV format. You can see guys, data.csv. Okay. So I will write read CSV. Okay. If data is in Excel format dot XLSX format, then you can write read Excel. Okay. If in data is in JSON format, you can use read.json. So here my data is in CSV format. So that's why I write here read underscore CSV. So pd.read CSV and the file का नाम. Okay. Just I will copy the relative path. Copy the relative path and paste here data.csv. Nothing. Okay. नाउ एक बार चेक कर लेते हैं डेटा ठीक से यहाँ पे लोड हुआ है या नहीं. एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं. प्रिंट df डॉट हेड. तो df डॉट हेड करने से क्या होता है. सो व्हाट actually do the head function will print the first 5 row from the data. Okay. तो डेटा में से फर्स्ट 5 रो को प्रिंट करेगा df डॉट हेड करने से. अगर df डॉट टेल करूं तो क्या होगा. इफ आई राइट df डॉट टेल then it will print the last
5 data, last 5 rows. Okay, so I print here df dot head just for checking my data is loaded successfully or not, nothing else. Okay, just run it. Okay, just wait, guys. Okay, now it's printed successfully. Okay, so it printed first 5 rows like site, bedroom, location and rent. Okay, जैसा मेरा डेटा सेट में है. ओके, नाउ गाइस मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोलूंगा. ओके, टाइम बहुत कम है. नाउ लेट्स रिमूव दिस. सी, वन मोर थिंग. मैंने बोला था यहाँ पे लेबल एनकोडर, तो लेबल एनकोडर यहाँ पे क्या है? व्हाट इज लेबल एनकोडर? सो लेबल एनकोडर इज नथिंग बट, देखो यहाँ पे सब जो डेटा है ये सब न्यूमेरिकल डेटा है. ओके, मतलब नंबर्स है. ओके, ऑल डेटा इज इन नंबर फॉर्मेट. ओके, लाइक साइज, बेडरूम्स एंड रेंट, एक्सेप्ट लोकेशन. ओके, तो लोकेशन यहाँ पे मेरा न्यू में एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है. लाइक कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर, चेन्नई. ओके, जो भी हो गया, डेटा मेरा यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में है. तो फर्स्ट वी नीड टू convert this location into numerical form. Okay, like for example, converted Kolkata into 0, Mumbai for 1, Delhi 2, Hyderabad 3, Mumbai 1, Hyderabad 3, Bangalore let's suppose 4, Chennai suppose 5, Kolkata 0, Mumbai 1, like this. Okay, so इसको बोलते हैं encode करना डेटा को. So convert the text data into numerical form. It's known as encoding. Okay, so यही है encoder का काम. So let's transfer. So first create a variable call. Okay, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ for your understanding. Encode location to numeric using level encoder. Level encoder. Okay. Now create a variable. Anything. I just use here LE. LE means level encoder. So LE equals to, just write this level encoder. लेवल एनकोडर, तो लेवल एनकोडर को मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया. लेवल एनकोडर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया. ओके, हाँ मैं डेटा शेयर कर दूंगा, डोंट वरी. ओके, एल इक्वल्स टू लेवल एनकोडर. देन create a new column. Create a new column called location index. Okay, for location index to change the location into numerical form. Okay, so for this, for creating a new column, you have to write df, then new column name. Okay, you can watch my Panda video. Okay, here I will explain everything from basic to advanced in Panda. So location index equals to label encoder, means here मेरा le dot fit transform. Fit transform means transform होगा किसको? df. यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है? मेरा लोकेशन. ओके, तो मुझे लोकेशन को कन्वर्ट करना है, तो df लोकेशन. df लोकेशन. ओके, देन एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं. जस्ट प्रिंट गाइस df डॉट हेड, जस्ट फॉर शो यू ये सक्सेसफुली हुआ है या नहीं. Okay, if you have any doubt or any question, you ask me
in the comment section. I will answer everything. Okay. Yes, I will share the data. Okay. Now it converted. Okay, here you can see here added a new column called location index. Okay, for Kolkata it index 5, for Mumbai it's index 6, for Delhi it's index 3, for Hyderabad it's index 4, for Mumbai it's 6. Okay, for Mumbai 6. So 1 2 किसके लिए हुआ है पता नहीं, अगर बड़ा डेटा होगा तो देख सकते थे, कोई बात नहीं, डोंट वरी गाइस, तो हो गया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम न्यूमेरिकल. ओके, देन हमें क्या होगा, क्या करना होगा, मैंने पहले ही बोला था, एज आई टोल्ड यू गाइस, वी हैव टू टाइप ऑफ वेरिएबल, वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, सो यू, मैं नहीं बोलूंगा, यू गाइस टोल्ड मी हियर what are the independent variable and what is our dependent variable in this data. You guys tell me what are the independent variable and what is here our dependent variable. Okay, means which variable depend with what variable. Okay, you guys told me. Yes, you can take your own data. You guys tell me here what are the independent variable and what is the dependent variable here. You guys told me in the comment section. Fast. Time is short. अरे किस किस डेटा के ऊपर कौन डेटा डिपेंडेंट है, मतलब अगर ए डेटा चेंज हो तो ओ डेटा भी चेंज होगा. Okay, right, very good. Independent size, dependent rate. Exactly. Here, independence data are size, bedroom, and location. Three are independent data. Okay, and rent is the dependent data here. Okay, rent is dependent with what? Rent is dependent with size, bedroom, and location. Okay, if size increase, then rent increase. If bedroom increase, then rent increase. If location is in it is in prime location like Mumbai, Delhi, Hyderabad, so rent will increase. Okay, so rent is the dependent variable with location, bedroom, and size. Okay, here threes are independent variable: bedroom, size, and location, and rent is dependent variable. Okay, so as I told you, we define independent variables with x, and we assign dependent variable with y. Okay, okay, so define feature and target. Okay, so independent data, independent variable is also known as features, and independent variable also known as target. Okay, so these three are known as feature, and this rent is known as target. Okay, uh, let's define this x. X means our independent variable. Okay, so df first size, कॉलम का नाम देख लेते हैं एक बार, साइज, बेडरूम एंड लोकेशन, लोकेशन नहीं, लोकेशन इंडेक्स, और न्यू न्यू कॉलम, साइज, बेडरूम एंड क्या, लोकेशन इंडेक्स. We cannot give the text based location, we have to give the machine with numerical form. Location index. Okay, location index, size, bedroom, and location index, these three are
independent. So that's why I stored it in X. Okay. And what is the dependent or target variable? Y. What? Rent, right? So df and uh, rent. Okay. Now, okay, okay, very good. Now we have to, now let's move into train and test split. So what is train and test split? Okay. Suppose uh, suppose मेरे पास एक डेटा है 100 रोज का. ओके. फॉर ट्रेनिंग आई विल नॉट गिव टू मशीन विथ माई ऑल डेटा. मैं मशीन को पूरा का पूरा 100 डेटा नहीं दे दूंगा. ओके. मैं 80 डेटा दूंगा. ओके. आई विल गिव द मशीन 80 डेटा एंड 20 डेटा, लास्ट 20 डेटा मैं नहीं दूंगा, उसको टेस्टिंग पर्पस के लिए रख दूंगा. ओके. लाइक मैं अगर 80 डेटा मशीन को देता हूं, उसके ऊपर ट्रेन करता हूं एंड लास्ट 20 डेटा देके मशीन को प्रेडिक्ट करवाने की कोशिश करता हूं और एक्चुअल डेटा के साथ उसका कंपेयर करूंगा कि वो कितना एक्यूरेट हो रहा है या नहीं. ओके. यू गाइस गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई विल एक्सप्लेन अगेन. Okay, let's say हमारे पास we have 100 of data. Okay, we have 100 rows of data. Okay, we we are not going to give all the data to our machine for training. Okay, we give, like mm, we give 80 data to machine and the remaining 20 data uh, keep with us for testing. Okay, कि वो एक्यूरेट होता, कितना एक्यूरेट होता है या नहीं. let's say um, let's say for example I give the machine like for this. Okay. up to this up to this 1428 for Ahmedabad. Okay, up to this data, and the remaining this data I will keep it with me and give it for testing. ये कितना एक्यूरेट आता है या नहीं. लाइक अगर इसके इस रेंट के बेस ऑन दिस, इस रेंट के आसपास आ रहा है या नहीं. ओके. दिस इज ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट. ओके. तो ये क्या करता है, दिस इज डन, it is convert, it can convert the data into training and testing. Okay. Let's say we can take 80% for training and 20% for testing. We can also take 90% for training and 10% for testing. Okay. So this is the purpose of train test split. Okay. I did not understand line number 14. Line number 14. ये वाला. Okay. Let's say मेरे डेटा में, okay, we have site, bedroom, location and rent. Okay, you can see all the data are in numerical format. Okay, means number format. Okay, all data is in number format, but location is in text format. Okay, so machine cannot understand text based data. Okay, machine only understand number. Okay, so we have to convert the टेक्स्ट डेटा टू न्यूमेरिकल. ओके. तो इसको हमें न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना होगा. ओके. तो मेरे पास यहाँ पे कितना, कितने लोकेशंस है, लाइक कोलकाता एक हो गया, मुंबई 2, 3, 4, 5, 6. ओके. सो मेरे पास यहाँ पे 6 लोकेशन है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई एंड बेंगलुरु. ओके. सो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं हर एक लोकेशन के लिए एक स्पेसिफिक नंबर दे दूंगा. लाइक कोलकाता के लिए 1, मुंबई के लिए 2. ओके. फॉर दिल्ली 3, फॉर हैदराबाद 4, फॉर बेंगलोर 5, फॉर चेन्नई 6. ओके. ऐसे करके एक नंबर दे दूंगा स्पेसिफिक, कि अगर एक नंबर बोलूं तो मशीन पहचान जाए कि वो कौन सा सिटी है. लाइक अगर मैं बोलूं कि नंबर 4, तो वो पहचान जाएगा कि वो हैदराबाद है. अगर मैं बोलूं नंबर 1, वो पहचान जाएगा वो कोलकाता है. ओके, लाइक दिस. ओके.
Now you understand, I guess. Okay. Now move to train test split. Train test split is nothing but splitting the data into training set and testing set. Okay. So we have to split the data. Split the data set. Split the data set. Okay. For splitting the data, we have here x and y. Okay. X for मेरा जो हो गया independent variable and y is our dependent variable. Okay. For train and test, we need four variables. Okay. एक गया हमारा एक टेस्ट एंड एक्स ट्रेन एंड दूसरा हो गया वाई ट्रेन वाई टेस्ट. ओके. तो मेरा टोटल फोर वेरिएबल्स चाहिए यहाँ पे. ओके. अगर मैं ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करूं तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी दो वेरिएबल्स है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. ओके. सो एक हो गया हमारा एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन एंड दूसरा वाई टेस्ट वाई ट्रेन. ओके. सो जस्ट split the data into x train x test and y train y test. For this, just write x test comma x train. Sorry, first train. We have to train first. X train x test, then y y train and y test. Okay, x train x test and y train y test. मैं यहाँ पे किसको कॉल कर लूंगा? मैं ट्रेन ऑन टेस्ट को कॉल कर लूंगा. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा इसका. तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और किसको स्प्लिट करूंगा मैं यहाँ पे? किसको स्प्लिट करूंगा? एक्स को और वाई को. राइट. आई विल स्प्लिट एक्स एंड वाई. so just write x and y. Okay. नाउ मैं कितना परसेंट में स्प्लिट करना चाहता हूँ, लाइक मैं x में कितना परसेंट रखना चाहता हूँ और y में कितना परसेंट, मतलब टेस्टिंग में कितना परसेंट रखना चाहता हूँ. ओके. लेट सपोज मैं रखना चाहता हूँ, आई वांट टू कीप 80% in training dataset and 20% in testing. Okay. For this, just write here test size equals to 0.2. 0.2 means 20%. And random state equals to 42. So random state 42 यहाँ पे क्या है? इसको इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जाएगा. ओके. तो अभी के लिए समझ लो, रैंडम स्टेट एक जस्ट नंबर है, तो वो कोई भी यहाँ पे रैंडमली डेटा को ट्रेन के लिए लेगा और कोई भी रैंडमली डेटा को टेस्ट के लिए ले लेगा. ओके. नाउ मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया. अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we need to do train the model. Okay. We need to train the model. So train the linear model. Train the linear model. Okay. So here मेरे पास यहाँ पे मॉडल है ऑलरेडी, linear regression. अच्छा. इसके बाद में तुम लोगों को एक बोनस टिप दूंगा. ओके. वाई 42 इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा एक्चुअली. मतलब 42 यहाँ पे क्यों होता है, एक समझ सकते हो. कॉमन वेरिएबल, कॉमन कन्वेंशनल वेरिएबल है मशीन लर्निंग के लिए. ओके. इट्स जस्ट ए सीड वैल्यू फॉर रैंडम नंबर जनरेटर. ओके. तुम यहाँ पे 42 की जगह दूसरे भी कुछ रख सकते हो, लाइक 30, 32, 31. ओके. दिस इज द यूनिवर्सल नंबर. ओके. तो जब भी सब लोग मशीन लर्निंग मॉडल को बनाते हैं तो यहाँ पे रैंडम स्टेट 42 ही देता है. मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्यों देता है,
but you can write anything like 30, 32, anything. ओके, सो एक समझ सकते हो, ये एक जोक है डेटा साइंस के. ओके, नाउ लेट्स मूव टू ट्रेन द मॉडल. नाउ क्रिएट ए वेरिएबल कॉल मॉडल. ओके, वीडियो के एंड में एक तुम लोगों को एक बोनस टिप दूंगा. ट्रेन टेस्ट एंड रैंडम स्टेट. ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन. देखो, ट्रेन एंड टेस्ट मीन्स वी हैव टू split the data into training and for testing. Like if we give all the data to machine, okay, so for which data we can test our machine is accurate or not, right? अगर एक एग्जांपल से समझो, सपोज मेरे पास 3 बनाना है, 3 बनाना, ओके, डिफरेंट साइज का 3 बनाना है और 3 एप्पल है. तो मुझे एक बच्चे को पहचानना, समझाना है कि कौन सा बनाना है और कौन सा एप्पल है. तो पहले मैं 2 बनाना उसको दिखाऊंगा और 2 एप्पल उसको दिखाऊंगा. ओके, एंड लास्ट जो बनाना और एप्पल मैंने नहीं दिखाया था, सपोज वो थोड़ा छोटा हो सकता है, वो थोड़ा कलर में डिफरेंस हो सकता है, तो मैं उसको देके उस बच्चे को पहचानने की कोशिश करवाऊंगा कि वो पहचान पाता है या नहीं. Okay, for this train and test data, for this, okay, so we wouldn't give the all data for training. We give 80% of data to machine for training and keep 20% for training to see how accurate our model will be. Okay, so for preparing model, so create a variable called model and just write here, just create a object of linear regression, which we have imported in this line number 4. Okay, model equals to linear regression. Okay, then how to train the data? Just write model dot fit, model dot fit, model dot fit, और कौन से डेटा से ट्रेन करवाऊंगा यहाँ पे, with which data we are going to train the model for X train and Y train. Okay, we wouldn't give the machine X test and Y test. Okay, those are for testing. Okay, for training we only give X train and Y train for training. Okay, just give here X train and Y train. Okay, X train and Y train. Just keep, just I write here print model trained. Okay, so if the model successfully trained, then it message pop up model trained. Okay, and if any error, then it can be just test. Okay, okay, so bonus tips for you. हाँ, मैटप्लॉटलिब बता दूंगा. जस्ट अपने सीएमडी में जाना और लिखना पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, देन हिट एंटर. ओके, अच्छा, तुम लोगों को एक बोनस टिप देता हूँ. ओके, ओके, मॉडल ट्रेंड भी यहाँ पे हो गया, तो इसका मतलब देयर इज नो एरर इन दिस, इन माय कोड. ओके, तो बोनस टिप यहाँ पे क्या है, देखो. For linear regression, I will use the sklearn library called linear regression. Okay, sklearn library. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया model dot fit एंड वो अपने आप ट्रेन हो गया इस sklearn लाइब्रेरी के मदद से. ओके, बट यू कैन नॉट सी what algorithm or how algorithm actually work. Okay, how statistical and mathematical function inside in backend how work. Okay, तो बैकएंड में कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कैसे इसको मतलब एक स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट हो रहा है, कैसे इसका एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क कर रहा है लिनियर रिग्रेशन का, ये तुम्हें पता नहीं चल रहा है, राइट? You only write the model dot fit and give the train test data, and scikit-learn sklearn will sklearn can prepare
the data for you. Okay, but you cannot understand or you cannot see how the algorithm actually work. बैकएंड में क्या हो रहा है, कैसा मैथमेटिकल फंक्शन काम कर रहा है, ओके कैसे लॉजिकली ये हो रहा है, किस किस तरह से ये हो रहा है. ओके एंड ओके एंड आई थिंक you cannot see a, how actually our machine learning model work in backend with mathematical and statistical in a YouTube. Okay, I hope ये कोई भी किसी भी वीडियो में मैं तुम लोग नहीं देखोगे. अगर YouTube में जाके सर्च करोगे कि मशीन लर्निंग और लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सब लोग सब देखोगे कि लाइब्रेरी के यूज करके ही करवा रहा है, साइकिट लर्न करके या और कोई दूसरे लाइब्रेरी. बट एक्चुअली बैकएंड में क्या मैथमेटिकल फंक्शन है और बैकएंड में कैसे काम कर रहा है ये नहीं पता चलेगा. इसके लिए जस्ट अपने यूट्यूब में जाओ, अपना यूट्यूब में जाना अगर इसको जानने का इच्छा हो, अपना यूट्यूब में जाना अगर इसका जानने को इच्छा हो तो यूट्यूब में जाना और हमारे हमारे कोडेक्स इंटर्न चैनल को सर्च कर लेना. ओके, यू सर्च आवर कोडेक्स इंटर्न चैनल, go to our channel, go to video section. Okay, and you can see here linear regression from scratch. Okay, here linear regression from scratch in Python, no library, full math and statistics. Okay, so you if you guys curious about how machine learning actually work behind mathematics and with mathematics and statistics, you can watch this video. Okay, I will explain everything and with code. Okay, कैसे एक्चुअली काम कर रहा है इस वीडियो के बाद इसको देख सकते हो अगर इसका क्यूरियोसिटी हो तो. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड आवर मॉडल. ओके, आवर मॉडल ट्रेंड सक्सेसफुली हो गया. नाउ नाउ प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट करके देखते हैं. ओके, सो y pred ये प्रेडिक्ट वेरिएबल है, y pred इक्वल्स टू मॉडल मॉडल डॉट प्रेडिक्ट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट और किसके ऊपर मैं प्रिडिक्शन दूंगा, एक्स टेस्ट जो डेटा मेरा टेस्टिंग के पास था उसके ऊपर मैं प्रेडिक्ट करवाऊंगा. ओके, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट. ओके, सो एक एक्स टेस्ट को प्रेडिक्ट करने से मेरा यहाँ पे वाई प्रेड में स्टोर होगा. ओके, और मैं अब वाई प्रेड को वाई टेस्ट के साथ कंपेयर करके देखूंगा कि कितना एक्यूरेट है मेरा मॉडल. ओके, लाइक लाइक देखो इस ये मेरा तो ये दोनों डेटा से ट्रेन किया हूँ, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन से. ओके, नाउ create a new variable y pred and model dot predict x test. ओके, सो जो भी मेरा रिमेनिंग टेस्टिंग डेटा था उसको मैं मॉडल के ऊपर प्रेडिक्ट करवा रहा हूँ, प्रेडिक्ट करके मैं y pred में स्टोर करवा रहा हूँ और इसका एक्चुअल जो वैल्यू है, इसका एक्चुअल जो आंसर है वो स्टोर है y टेस्ट में. ओके, y टेस्ट में है एक्चुअल और y pred में है प्रेडिक्शन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर y test and y pred so we can see the our model how accurate. Okay, okay, let's compare. Let's compare. Let's compare like compare equals to pd dot data frame actual actual क्या है यहाँ पे y test, right, y test and
we have our prediction data. Prediction 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 क्या है? y pred. ओके, y pred, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना भी पड़ता है एक्चुअली, as टाइप इंटीजर. ओके, इसका सिंटेक्स है. नाउ लेट्स प्रिंट द कंपैरिजन. प्रिंट एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्शन बैकस्लैश n, मतलब न्यू लाइन हो गया. और किसको प्रिंट करूंगा? कंपैरिजन को, सिर्फ हेड को प्रिंट करूंगा. कंपेयर डॉट हेड. नाउ लेट्स से हाउ एक्यूरेट आवर मॉडल इज. Okay, okay guys, here you can see, here we have actual data which is around 32,000, and our prediction data is 33,304. ओके, मतलब ऑलमोस्ट जो है, देखो एकदम तो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता ना प्रिडिक्शन, तो ऑलमोस्ट इसके पास गया है. ओके, सो जो एक्यूरेट डेटा 20,692, आवर प्रिडिक्शन डेटा इज 21,000. ओके, सो ऑलमोस्ट पास गया है. देखो मेरे पास यहाँ पे जो है एक सिंपल डेटा सेट था विथ 100 रोज. ओके, सो इफ यू टेक विथ ए बिग डेटा और ग्रेट फाइन ट्यून डेटा लाइक 1,000 of rows and 1,000 of features, तो your model will prepare more accurate. ओके, तो इस डेटा का थोड़ा बहुत सी लेटेंसी है, लाइक ये एक्चुअल में 32,000 था और यहाँ पे 28,000. ओके, so this is how our model work. Now let's say how to test, how to predict a new value. Okay, how to predict a new value, इसको जस्ट कमेंट कर देते हैं. ओके, सो एक न्यू डेटा लेके देखते हैं. सपोज न्यू लोकेशन इज मुंबई, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लोकेशन इंडेक्स में कन्वर्ट करना होगा. राइट, इंडेक्स में कन्वर्ट करना होगा इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में. सो न्यू लोकेशन इंडेक्स दोस्तों एली, जो मेरा पहले था. ओके, लेवल इनकोडर जो मैंने पहले था, जो वेरिएबल, तो ट्रांसफॉर्म न्यू लोकेशन एंड 0. ओके, ये 0 क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ पे एक सिंगल वन डायमेंशनल डेटा यूज कर रहा हूँ. ओके, बट यहाँ पे मेरे पास जो था ये 2 डायमेंशनल डेटा था. ओके, so that's why I put here 0. okay, now create a new data. So new data equals to, जो मेरा है न्यू डेटा का, सपोज उसका साइज है 1200 स्क्वायर फीट, उसका जो है उसका नंबर ऑफ रूम्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट फीचर था नंबर ऑफ रूम. सपोज उसका नंबर ऑफ रूम है 3, एंड देन उसका लोकेशन है मेरा इस वेरिएबल न्यू लोकेशन इंडेक्स. तो दे देते हैं न्यू लोकेशन इंडेक्स, तो ये मेरा हो गया न्यू डेटा. ओके, न्यू डेटा. नाउ प्रेडिक्ट विथ द न्यू डेटा. सपोज प्रेडिक्ट इक्वल्स टू मेरा मॉडल जो था, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट इसको प्रेडिक्ट करेगा न्यू डेटा को. न्यू डेटा. ओके, अब इसका प्रिडिक्शन प्राइस प्रिंट करके देखते हैं. प्रिडिक्शन प्राइस प्रिंट करने के लिए प्रेडिक्टेड रेंट बेस्ड ऑन
on this data is our predict or predict. ओके, लेट्स ट्राई करके देखते हैं कितना आता है. ओके, प्रेडिक्शन रेंट बेस्ड ऑन predicted रेंट बेस्ड ऑन दिस डेटा इज, ये आ रहा है लाइक 27,959 पॉइंट समथिंग. ओके, तो ये आ रहा है मेरा प्रेडिक्शन करके. ओके, तो बेस्ड ऑन दिस लोकेशन द स्क्वायर फीट एंड 3. ओके, तो ये 100% तो एक्यूरेट नहीं है, 70-80% एक्यूरेट हो सकता है. ओके, और एक मॉडल को, एक फाइन ट्यून मॉडल बनाने के लिए तुम्हें अच्छी डेटा की जरूरत होगी. ओके, यू नीड गुड क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर मेक of a fine tune model. Okay, okay guys, so there is, and more, there is another thing called matplotlib data visualization, but I cannot show you because it's already 8:37 and there will be another class. There will be backend class also from 9 p.m. So that's why I cannot show you today, guys, matplotlib data visualization part. But don't worry, uh, you can check out my you can check out my uh, YouTube and you can see the matplotlib. Okay, okay, Saurabh, thank you. Okay, guys. Okay, one more thing. If you want this source code file, you can ask me. I will give you the source code file. Okay, and I will also share the data file. Okay, so data.csv I will share with WhatsApp group. Okay, ओके, डब्ल्यूपी में भेज दूंगा आदित्य, कोई टेंशन करने की बात नहीं है. मैं अभी भेज दूंगा, कोई बात नहीं, वीडियो की एंड होने के बाद. हाँ, जनरली 0.7 और 0.8 इज गुड फॉर R2 स्कोर. ओके, वन मोर थिंग, R2 स्कोर दिखाना बाकी था. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट फ्यू सेकेंड गाइस. R2 स्कोर दिखाना बाकी था मेरा. जस्ट अ सेकेंड, इसको कमेंट आउट कर देते हैं. जस्ट अ सेकेंड, एक वन मोर थिंग, R2 स्कोर को दिखाना बाकी है. R2 स्कोर मीन्स इवेल्युएट द मॉडल, ये मॉडल कितना एक्यूरेट है. R2 R2 score is nothing but, just write R2 score एंड उसको मैं दे दो y टेस्ट को, y टेस्ट जो मेरा टेस्टिंग डेटा था, और y प्रेडिक्शन, y प्रेडिक्शन डेटा. ओके, तो इसका R2 स्कोर निकल के आ जाएगा. देखते हैं. तो इसका R2 स्कोर आया 0.9. ओके, सो कौन बोल रहा था, आई मीन, so 0.7 or 0.8 is a good, so 0.9 is also too much good for the small data actually. Okay, R2 score nothing but sum of the squared error divided by total sum of squared. Okay, तो कितना error आ रहा है और total sum of squares कितना है. Okay, तो ACC मतलब sum और squared error. Okay, so error between predict and actual value or divided by SST. SST मतलब total variance in actual value. Okay, okay, so 0.94 means 94% variance is explained by the model, experienced by the model. Okay, नहीं, बैकएंड में नहीं पढ़ाऊंगा एक्चुअली. बैकएंड जो है वो राहुल सर पढ़ाएगा 9 बजे से. ओके, नोट जेएस में. ओके, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. ये कितना टाइम का कोर्स है, तो 1 मंथ का कोर्स है.
ये इंटर्नशिप जो है ये तो 1 मंथ का है, तुम लोगों को पता ही है। और ऑफर लेटर, यू यू विल गेट ऑफर लेटर बाय दिस वीक। ओके, सो आज 3 तारीख है, तो दिस वीक 4-5 तारीख के अंदर तुम लोग के पास ऑफर लेटर पहुंच जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं आज ही प्रिपेयर करूंगा। ओके, व्हाट? थैंक्स अ लॉट बेबी। ओके, थैंक यू आदित्य। बेबी मीन्स क्या भाई? अच्छा, बाय बाय। इसको ठीक से लिखना चाहिए ना। देयर इज डेली लेक्चर ऑफ पाइथन डेवलपमेंट, नो डेली तो नहीं, बट आई विल ट्राई टू गिव another 2 lectures. ओके, एंड यू यू तुम इस चैनल के ऊपर थोड़ा ध्यान रख सकते हो। हम लोग बूट कैंप्स देते हैं, लाइक जेनरेटिव एआई के ऊपर और बहुत सारे चीज के ऊपर। हम लोग पाइथन में, बैकएंड में, वेब डेवलपमेंट में बूट कैंप्स भी देते हैं। ओके, यू कैन चेक, यू कैन, फ्री में बूट कैंप देते हैं विथ फ्री सर्टिफिकेट। ओके, आई होप राहुल एक्सप्लेन yesterday. Guys, if you have enjoyed this video, then please don't forget to like and subscribe our channel for more amazing content. Okay, guys, uh, it's already 8:43 and backend class will start from 9. Okay, so I cannot um, explain more, और मैं इस वीडियो को और बड़ा नहीं करूंगा। सर, इंटर्नशिप पाइथन डेवलपमेंट। ओके, ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू ऑल। And if you guys have any question, any doubt, you can ask me my WhatsApp by my WhatsApp. Okay, तो मेरा WhatsApp तो सबके पास ही है, ग्रुप में ही देख लेना। ओके, कोई भी डाउट होगा तो बोलना। सर कैन सजेस्ट जेंगो वीडियो। ओके, जेंगो वीडियो अगर सीखना हो तो यू कैन चेक द चाय और कोट्स चैनल। ओके, एंड ओके, जेंगो boot camp will be there very soon. Okay, thank you everyone, thank you for watching this video. एंड प्लीज, अगर अच्छा लगा तो लाइक दे देना एक वीडियो को। और ओके, मैं और बड़ा नहीं करूंगा, बैकएंड का क्लास भी स्टार्ट हो गया। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, एंजॉय करो, मस्त रहो। ओके, ओके, इंटर्नशिप का अपडेट मैं देता रहूंगा ग्रुप में। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे एवरीवन, हैव ए नाइस डे। ओके गाइस, चलो स्ट्रीम को यहीं पे खत्म करते हैं। गुड नाइट एवरीवन।